Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. In our last video, we discussed about topics like authority and power. In this video, I shall be talking about topics like delegation, their features, principles, benefits, process, and then finally, what do you mean by direction? So let's begin the video. The first topic here is delegation. So what do you mean by the word delegation or to delegate? To delegate is to give somebody with a lower job or position a particular task to do. Means delegation is the process of assigning task or responsibility to others, empowering them to complete the work on your behalf. Means you are giving somebody a part of your work to do. अपने काम का दायित्व किसी और को सौंपना उसको हम delegate करना कहते हैं. So effective delegation permits managers to tackle higher priority duties while helping them to train and develop lower level managers. So this is a process where a higher authority individual, a superior, can delegate or give a part of their work to their subordinates to complete with a defined authority, of course. I'll give you a very simple example. Say your team has been assigned a task of giving presentation in a seminar. Now, how will you use this concept while working? First, what you will do, you will identify the task to be completed, which will be making a presentation. All right. So you will begin by identifying the key components of the presentation, like doing the research work, content creation, working on the visuals, the graphics, the slides, and then finally delivering the presentation. So now you have broken down the task into different subtasks. Now what you will do, you will assign each subtask to members of your team, because you alone will not be doing the entire works. You being the head of the team or the team leader, you will be delegating the sub part of the entire the main the chunk of the work to different people in your team. So what you can do, you can identify individual strengths and interests. You will see who are the people in your team and what are their strengths. Let's say one student is particularly skilled at researching. Another one is very good in content creation or maybe in designing slides. And there is somebody who is excellent in presenting or delivering presentation. So according to their skills and their expertise and abilities, you will assign them the subtask of your activity. So what you have done, you have delegated them work, and then finally you will divide the task. Like I said, researching, someone will do the content creation, someone will do the presentation making, and then finally someone will deliver the presentation. So you have divided the work and then you have allotted piece of work to each individual in your team, and that ways you will lessen your burden and the work will get completed in before the deadline. So delegation is a process whereby a superior passes to a subordinate part of his or her own authority to make decisions. So that means it's a one-way street, we can say, where the superior will give work to their subordinates or their team members. All right. And why do we need delegation? What is the importance of delegation in an organization? First and foremost, this way the managers they can lessen their load of work, and they can help the subordinates and their team members to excel and get expertise in doing different kind of variety of tasks. And then this in a way also enhances the satisfaction and motivates the employee, because they will get an idea or they will get a feeling that okay, their contribution is equally important in that particular work, so they get a kind of motivation in doing work. So I hope you understood the concept of delegation. There are certain features or characteristics of delegation. A cooperative relationship. So जब आप किसी को काम अपनी टीम में आप काम बांटते हैं, so there has to be a cooperative relationship between the superior and the subordinates. जितना cooperation में हम काम करेंगे, काम उतना बेहतर तरीके से होगा, efficiently होगा और जल्दी हो पाएगा. Then it is an act of mutual reliance. Means
both the parties, the superior who is delegating and the subordinates to whom the work is being delegated, उन दोनों के बीच में there has to be mutual understanding and dependence and of course trust. That ways only the work will be done in more efficient manner. Then third is the freedom of thought and actions, which simply means that the one who has delegated, मतलब जो superior है, they should give freedom of working to the people to whom they have delegated the work. जिसको हमने काम दिया है उनको हमें वो freedom देना चाहिए कि they can work as per their choice and as per their methodology or the way of working. And then it is a courageous act. Why? Because it takes a lot of courage to give your work to somebody else, because at the end of the day you will be responsible for the work. अगर हमने अपना काम किसी को दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी विद अस ओनली. अगर टीम लीडर के पास ये काम होता है कि प्रेजेंटेशन देना है क्लास में, तो भले ही उसको हमने डिवाइड करके अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग हिस्सा कंप्लीट करके प्रेजेंटेशन तैयार की है, बट द अकाउंटेबिलिटी और द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द टीम लीडर ओनली. So this is a courageous act. All right, so next move on to the next topic, which is the principles of delegation. There are four principles of delegation. First and foremost, the principle of result accepted. Means this suggests that every manager, before delegating the powers to the subordinate, should be able to clearly define the goals as well as the result expected out of them. So coming back to the same example, जब हम presentation का अलग अलग हिस्सा अपने टीम में बांटते हैं कि आपको रिसर्च करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको विजुअल डिजाइनिंग करनी है, so we should explain them the proper results we expect out of them, कि उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं और कितने कितने what is the timeline of completing that particular task. So this should be transparent with the people to whom we are delegating the work. Second principle होता है the principle of parity of authority and responsibility. ये प्रिंसिपल कहता है that the manager should keep a balance between authority and responsibility. The manager should know कि कितनी अथॉरिटी हम दे रहे हैं टीम में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे रहे हैं, एंड दैट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के पास ही होती है. अगर काम खराब भी हुआ तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हमारे टीम मेंबर्स की, क्योंकि उनको काम हमने दिया है. Alright. Third is the principle of absolute responsibility. This principle says that, as I told you, the end responsibility or accountability will always lie with the superior, the team leader. एंड में कुछ अगर खराब होता है या कुछ अच्छा होता है, उसके एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारी ही होगी. इट विल नेवर बी लाइक वी हैव डेलीगेटेड द वर्क सो वी कैन जस्ट चिल कि हमने तो काम दे दिया. नो, you have to make sure that the work is being done properly by each member of the team and on time, and the entire accountability will always be ours, being a manager or the team leader. The fourth principle says the principle of authority level. This principle suggests that a manager should exercise his authority within the jurisdiction and framework given. Means you have to be valid with your whatever you're saying in the team, whatever work you're giving, you should do it within the jurisdiction. Means you should exercise proper लॉफुल एक्ट्स एंड विद वैलिडिटी. आप जो काम कह रहे हो उसका आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं, उस चीज को ध्यान में रख के आप काम दे सकते हो. इफ यू हैव द अथॉरिटी देन ओनली यू कैन डेलीगेट द वर्क टू योर सबऑर्डिनेट्स. ऑलराइट, सो दीज वर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन. Moving now to the process of delegation. Now, what are the different steps in delegation? So, go back to the same example which I explained about presentation. क्या करते हैं हम, जैसे आपको प्रेजेंटेशन असाइन हुआ, सो नाउ यू हैव अ टास्क इन फ्रंट ऑफ यू विच इज विच क्लियरली डिफाइंस यू कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो नाउ यू हैव अ टास्क इन फ्रंट ऑफ यू. what will you do next? Now you will select the appropriate person, selecting the right person for the right job, considering their skills, their expertise, their availability of potential candidates, and then you will choose who is capable of doing what kind of work in your team. That ways you will select the most appropriate person for the appropriate kind of job.
Next is provide resources. Now you have to ensure that the person has the necessary resources and skills and information to carry the task. That also you have to make sure कि जिनको आपने काम दिया उनके पास वो सारे skills and resources हैं कि नहीं उस काम को करने के लिए. Then you'll have to brief the team members. Like I've said earlier also, you have to make sure that you are transparent with the kind of work you are expecting from your team. उनको goals बताना, उनको क्या result चाहिए उनसे ये बताना बहुत important है. So you have to brief them कि what is the task, what are the different ways in which the task can be completed, and by what deadline you want the task to be completed. Then you have to set expectations, again expectation in terms of deadline, expectation in terms of quality of work, that has to be made understood to the team members. Then comes providing support and monitoring progress. It's not that ki on day one you have delegated the work of the presentation to your team and then you say कि हम 15th day में या 2 weeks के बाद we'll sit together and I want the entire task to be done that day. No, you have to give them proper feedback from time to time. You have to keep on monitoring what is the progress of your task on a regular basis. Then regular check is on the progress of the delegated task. Offering regular support and guidance will obviously enhance the capability and motivation of the employee, and the task will come out in a more efficient manner. And then you can finally evaluate the outcome. Means you can provide constructive feedback. You can see if the work has been done as per your expectations, and then what are the feedbacks, and what are the views or suggestions you have to the team, and then that can be shared at the end. So this was the entire process of delegation, which starts from assigning the task, selecting the appropriate person, briefing the team members about the work, setting expectations, providing them regular feedback and monitoring them, and then giving them the constructive feedback and recognition at the end. ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन? क्या जरूरत है या क्यों जरूरत पड़ती है डेलीगेशन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डेलीगेशन की जरूरत तब पड़ती है जब एज अ मैनेजर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया हो, मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही हो, और ऐसे काम आ गए हो जिसकी डेडलाइंस बहुत नियर हो, जो जल्दी हमें कंप्लीट करना है, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू हसल बिटवीन डिफरेंट important tasks, then in that case you can think of delegating your work to your subordinates who have little space, या जो थोड़ा फ्री है या जिनके पास थोड़ा कम काम है, या जो आपकी अपनी टीम है उनको आप काम बांट सकते हो. सो क्या बेनिफिट्स होगा जब आप ऐसे काम बांटोगे या डेलीगेट करोगे अपनी टीम को अपना काम? पहला, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स. इट हेल्प्स डेवलप पीपल एंड बिल्ड ट्रस्ट अमंग्स देम. Second, it creates accountability. Not just you as a manager, you will also teach your team members to hold accountability for their tasks. So you are inculcating a soft skill in your team members. उनको सिखाओगे आप कि किसी काम को लेना और उसको अच्छे से कंप्लीट करके उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना क्या होता है. Next is delegation helps increase engagement. So you will get a lot of time discussing, brainstorming with your team when you delegate them your work. आप उनके साथ बार बार बैठोगे, उनके साथ डिस्कशन में जाओगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होगा, अलग अलग व्यूज आएंगे, अलग अलग सजेशंस आएंगे. सो दैट हेल्प्स यू मेक अ गुड बॉन्डिंग एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग engagements with your team members. It reduces stress as it saves time. Of course, now you have a task to do, and when you divide the task into different sub tasks, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्ट्रेस जो एज अ मैनेजर आपके ऊपर है उसको कम कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, बिकॉज अब हर टीम मेंबर्स वो काम का टुकड़ा अलग अलग वो अकम्प्लिश करेंगे, एंड देन दैट वेज द इंटायर वर्क इज डन एंड यू get relief from stress. And of course it improves it helps in developing decision making. When you are giving you a task to a team member, उनको भी ये मौका मिलता है, ये opportunity मिलती है to
to exercise freedom of working, to exercise creativity. That way, even they inculcate the habit of decision making, habit of creative thinking, out of the box thinking, taking out accountability, taking responsibility. So, as a manager, you are inculcating these kind of soft skills within your team members through the act of delegation. So I hope you are clear with the work with the word delegation और उसकी क्या जरूरत पड़ती है organization में. All right. Now we'll also talk about failures of delegation. कई बार क्या हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एचपी ले लीजिए, एचसीएल, टीसीएस, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन इज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट और टीम. But there are certain people or there are certain type of managers who fear or who have a fear of failure when you think about delegation. क्यों होता है उनको ये fear factor? क्यों होता है? पहला, कई बार मैनेजर्स को ये लगता है कि शायद वो काम उतने अच्छे से उनके टीम मेंबर्स नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से वो कर पाए, इसलिए वो डेलीगेशन या काम को डेलीगेट नहीं करते हैं. सेकेंड, दे फील इट विल टेक टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन. कई बार मैनेजर्स को लगता है कि जितनी देर में हम टीम मेंबर्स को समझाएंगे काम कैसे करना है, क्या करना है, कब तक करना है, उतनी देर में हम खुद कर लेंगे. सो दे ऑल्सो हैव अ टाइम फैक्टर इन टू कंसिडरेशन. थर्ड आता है ट्रस्ट. मैनी टाइम्स मैनेजर्स का ये रेपुटेशन है या उनका इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, एंड सो दे डोंट ट्रस्ट देयर टीम मेंबर्स, दे डोंट ट्रस्ट देयर efficiency, or they don't trust the expertise of their team members. इस वजह से they don't delegate work to their team. And then sometimes managers feel their team doesn't possess the right kind of skill set or capabilities. So in चार cases में, many a times we see that people, managers, team members or the superiors don't go with the fundamental of delegating work to their subordinates. सो व्हाट आर द मेन की टेक अवे? अभी तक हमने जितने अलग अलग कंपोनेंट्स की बात की डेलीगेशन में, वो दीज आर द की क्वेश्चंस टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू थिंक ऑफ डेलीगेटिंग वर्क विद इन योर टीम. पहला, इज दिस टास्क दैट शुड बी डेलीगेटेड. पहला, क्या ये टास्क डेलीगेट करने लायक है? इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको डेलीगेट करना चाहोगे अलग अलग टुकड़ों में, या आपके पास टाइम बाउंडेशन इतनी है कि आप उसको टीम्स में बांट के फिर उसको कंप्लीट कराना चाहोगे. सो आइडेंटिफाइंग इफ द टास्क इज वर्थ डेलीगेटिंग और नॉट इज फर्स्ट क्वेश्चन. Second question to be considered is there someone else who can be given the necessary information or expertise to complete the task? आपके ग्रुप में कुछ कई बार कुछ ऐसे कैसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं या उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है. सो do you think that the task you think of delegating can be exposed in your team? क्या आप उसके बारे में सबको बता सकते हो, या आपकी टीम में है कोई इतना एक्सपर्ट जो उस काम को बेहतर तरीके से कर सके? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप डेलीगेशन की बात करते हैं. Next question which can arise in your mind is, does the task provide an opportunity to grow and develop another person's skill? क्या आप जो टास्क दे रहे हो करने के लिए, आप डेलीगेट कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स को, क्या उससे उनके कोई पर्सनल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट ऑल्सो यू शुड कंसिडर. And then last question which you should consider is, when delegated work is delivered back to you, will you be able to set aside enough time to review it thoroughly? So जब हमने काम दे दिया अपनी टीम मेंबर्स में, काम को डिवाइड कर दिया, उसको डेलीगेट कर दिया, काम को दे दिया, तो जब वो कंप्लीट करके हमें दे रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसको वापस थॉरोली चेक कर सके और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपना काम डेलीगेट करने का सोचते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो अपने साथ के कलीग्स को डेलीगेट करना हो, चाहे अपने से लोअर लेवल को या जूनियर्स को डेलीगेट करना हो. So these questions should be kept in mind while you go with the funda of delegating work in an organization. All right, so with this we have done with the concept of delegation. I hope you've understood it thoroughly. Now we'll move to the other concept which is very common in any organization, in any company, which is direction.
ये सारे क्या होते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, डेलीगेटिंग, ये सारी चीजें आपके फंक्शंस में आती हैं। सो डायरेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है डायरेक्शन? इट इज टेलिंग somebody or showing them the correct way of doing things. मतलब direction is telling people what to do, how to do, and seeing that they do it in the best of the capability. It includes instructing and looking over the performance of your employees. It makes sure you have to make sure that staff don't face bottleneck while achieving goals. You have to encourage them and motivate them throughout, and then you have to keep guiding them to prepare for their assigned task. So जब हम इन सारे components को मिला देते हैं उसको हम direction कहते हैं. Directing your people to do task in a way that they are able to achieve 100% perfection or efficiency in doing the work. As definition, we can say direction is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. It includes making assignments, corresponding procedures, seeing that mistakes are corrected, providing on-the-job instructions, and of course issuing orders. So direction क्या हुआ? अपनी टीम को, अपनी कंपनी के लोगों को बताना कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कोई गलती होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, काम के दौरान उनको और ट्रेनिंग देना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते रहना है, एंड ऑफ कोर्स टू इशू देम ऑर्डर्स इन अ वे so that they can learn in a better manner. What are the different characteristics of direction? Pehra, direction is action driven. Means directing sets an organization into motion and helps other managerial functions to initiate and activate. जब आप किसी को डायरेक्ट करते हो मतलब वो काम करना शुरू कर दें. For example, a superior guides his subordinates and explains the task, which will help the subordinate to start the work and achieve the goals. आपने उनको बोला कि चलो अब आपको ये काम करना है, ये इसका मेथड है, so they will start working. So that is why it's action driven. Directing is pervasive and continuous. This means direction is a continuous process. This is not a one time process कि आपने एक बार बोल दिया and everything will be done. You have to keep on repeating of the methodology and the way, and it comes on all the levels of the management. Pervasive matlab it will be from top to bottom, from bottom to the maybe middle management. So every superior will keep on directing their subordinate of how to do work and what work has to be done, so that these kind of supervision, motivation, leadership, communication, these kind of elements of directing can enhance the work of the organization and help organization reach its goal. Next is directing looks into the human factor, which means direct you cannot just just order somebody ki you have to do this task. You also have to see that it is helping them build interpersonal relationship within the team. It is also helping them bond in a better way within the team while doing the process. इसीलिए ये ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर करता है, ह्यूमन फीलिंग्स एंड ह्यूमन एबिलिटीज को कंसीडर करके आप अपनी टीम में डायरेक्ट कर सकते हो उन्हें काम करने के लिए. And then it directing flows from top to bottom. So as direction flows from top level to the bottom level, the manager is required to offer guidance to subordinates. As I told you, superiors अपने subordinates को, अपने juniors को बताएंगे क्या काम करना है, कैसे करना है. They will give the direction to their team members. So it's a top down approach. Now comes the importance. Why direction or directing your team is important. First and foremost, directing initiates action. As we've discussed, directing sets an organization into motion. जब आप किसी टीम मेंबर्स को बता देते हैं कि आपको ये पोर्शन ऑफ काम करना है, ऐसे करना है, अगर ये मिस्टेक्स होती है तो आप इसको ऐसे सुधार सकते हो, so they get the zeal to start performing. They get into motion, they get into action. Next is directing attempts to get maximum out of individual.
Directing helps superiors to realize the potential and identify the capabilities of their team members by motivating and guiding them. So आप जितना अच्छे से एज ए मैनेजर आप जितने अच्छे से डायरेक्ट करोगे अपने टीम मेंबर्स को, उतने बेहतर तरीके से वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे. सो इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ मोटिवेटिंग योर टीम. The better the direction, the best will be the performance of your team members. Third is directing helps to implement changes. So what happens, कई बार क्या होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से जब हमारा टेक्नोलॉजी या ई टिकटिंग नया नया कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, उसके पहले रिजर्वेशंस आपकी विंडो के थ्रू होते थे, मैनुअली होते थे. तो जब ये नया कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होने लगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस आए, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि नहीं, हम ये ऑनलाइन टिकटिंग नहीं कर सकते, वी कैन ओनली डू इट थ्रू विंडो, थ्रू मैनुअल प्रोसेस एंड ऑल दैट. उस केस में क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जब नई टेक्नोलॉजीज कंपनीज में आती हैं तो क्या हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब artificial intelligence has penetrated in almost all the organizations. So what you will see, lot of people opposing or lot of people resisting to these kind of changes. उस केसेस में, उन सिनेरियोज में डायरेक्शन बहुत हेल्प करता है. सो द द वे यू डायरेक्ट योर टीम, आप जितने बेहतर तरीके से उनको समझाओगे, कितने इफेक्टिवली उनको कम्युनिकेट करोगे कि व्हाट आर द गुड्स एंड द बैड्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स you can get from these new technologies, उतने अच्छे तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नए चेंज को एक्सेप्ट करेगा. सो क्या होता है, the introduction of any new methods of doing a particular task in a factory or in a company, for example, is resisted by workers. But when a manager explains the purpose, they guide them and then provide them sufficient training and rewards, इट इज इजिली एक्सेप्टेड बाय द वर्कर्स. तो क्या किया आपने, आपने वो चेंजेस, जो नए चेंजेस आप लेके आ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक्सेप्ट करने की ताकत या क्षमता अपने एम्प्लॉयज को दी, और उन्होंने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि आपने उनको इतने अच्छे तरीके से गाइड किया. तो दैट इज ऑल्सो one of the reasons why directing is important in an organization. And the last one is directing provides stability and balance in the organization. क्या मतलब हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल एवरी इंडिविजुअल हैज अ पर्सनल गोल. हर एक इंसान जो वहां पे काम कर रहा है, उसका अपना इंडिविजुअल गोल होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम कर रहे हैं. बट व्हेन द मैनेजर इंटीग्रेट्स द एफर्ट of all the individuals toward the achievement of the organizational goal through guidance, motivation, supervision, and communication, then there exists or there develops a stability and balance between personal growth and organizational growth. So जब हमारे मैनेजर्स, जो हमारे जो टॉप पे बैठे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उनका डायरेक्शन पावर इतना अच्छा होता है कि दे कैन एक्सप्लेन द इंडिविजुअल्स कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आप ऐसा कैसे काम करो कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो सके. Then you can say that you are a good director or a good manager, that you have the skills to motivate your employees to work towards the organizational goal along with focusing on their personal growth. तो ये सारे importance होते हैं. These are the factors why directing is an important activity or function of the management in any organization. I hope you've understood this. So with this, I come to the end of the video. I've explained you the concept of delegation, why it is important, what is the process of delegation, what are the things you have to keep in mind while you delegate work to your team or within your team. And then I have explained you what do you mean by directing in any organization and why it is important. With this, I'm ending the video. See you next time. Please like, share and subscribe. And thank you so much for watching.